Hi friends, hello everyone. Yeah, I think I am. I am in. I think. So a very good evening, and I hope your week has gone really well, nicely. So today the topic um, I have come up with is how to overcome the judgment. So this is the topic which I thought, last week when I was talking to my client, and the client was facing a little bit of problem that in my family something is happening. Few people are saying something about me, and I'm not liking it. It's not nice to say stuff and all of that. And that was a time when I thought I realized that so much we are. It's not only that person; it you, me, all of us, day in and day night. We always think about this one thing. वो क्या कह रहे हैं? Am I looking nice? Am I whatever I'm saying वो ठीक है या नहीं है? मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, मैंने ठीक से ड्रेसअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, सामने वाले बंदे से बात करूं कि नहीं करूं, राइट? और एट द सेम टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट उसने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, वो कैसा लग रहा है, वो कैसा नहीं लग रहा है, एंड देन वी डिसाइड कि मुझे उससे बात करनी है या नहीं करनी है, राइट? सो डे टू डे बेसिस के इश्यूज जो हैं, जो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उन सब चीज़ों में हम लोग जजमेंट फेस कर रहे होते हैं या फिर जजमेंट दे रहे होते हैं. यही दो चीज़ें चल रही होती हैं हमारी ऑल द टाइम. इफ़ यू सी योर लाइफ, राइट, इफ़ यू सी डे टू डे थिंग्स, इफ़ यू सी कि आपके ऑफिस में आप बात कर लो, आप अपने घर पे बात कर लो, आप अपने रिलेशनशिप में बात कर लो, आप किसी भी एरिया में बात कर लो, जजमेंट इज वन थिंग जिसे हम रोजाना में डील कर रहे होते हैं. ठीक. जजमेंट सिर्फ इतना भी हो सकता है कि मैंने क्या पहना है वो ठीक है या नहीं, या उसने कैसे कपड़े पहन लिए. और जजमेंट ये भी हो सकता है दैट that person has done something wrong, so he's a criminal. I'm not going to talk to that person, right? So, from small things to big things, this is one thing which is very common with each one of us, me, you, and everybody else. Either we are judging or we are in this fear of other people judging us, right? So that's the reason why I thought I should bring this is the hottest topic, you know. So I just thought I should bring it. So are you also feeling that why do people, uh, why are people seeing me? Why are the person? So you're standing in a function and somebody is looking at you, and we all of a sudden start looking at ourselves. हम अपने आप को ठीक करने लग जाते हैं, सब हेयर स्टाइल ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे. वी थिंक कि यार ये बंदा क्यों देख रहा है, व्हाई इज दैट पर्सन स्टेयरिंग एट मी, व्हाट्स द रीजन. आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा. बहुत सारी बार ये चीज़ें आप लोग के साथ भी हुई. ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे साथ हो गई हैं. हम जाते हैं ऑफिस, जाते हैं, कोई इंसान, आपके दो लोग बात कर रहे हैं, और आपकी तरफ देख लिया, दैट्स इट. वो आपका पूरा दिन स्पॉइल करने के लिए इनफ है, राइट? उसके बाद यू वोंट थिंक कि हो सकता है कि वो अपने बारे में सोच लूंगी. बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को उस चीज से बाहर निकालने के लिए कि कि वो मेरे बारे में कुछ सोच रहे थे, और पूरे टाइम वही चीज फिर चलती रहेगी, और जब भी वो चीज दोबारा माइंड में आई है, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि ओ माय गॉड, क्यों ऐसा किया, क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, क्या बात कर रहे होंगे, राइट? One very common thing, stage fear. When we talk about stage fear happens with different reasons, but बहुत बड़ा reason is the fear of judgment, right? So many times we want to go, we want to share our thoughts, and we think that those thoughts are important. But जैसे ही हम लोगों को लगता है कि हाँ, हमें ऊपर जाना चाहिए, स्टेज पे जाके शेयर करनी चाहिए, या पब्लिक में जाके शेयर करनी चाहिए, वहीं आके गड़बड़ हो जाती है. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग, पता नहीं यार मैं ठीक बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, या बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी.
पता नहीं मेरा कम्युनिकेशन कैसा होगा, पता नहीं मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं बहुत मोटी हूँ या बहुत पतली हूँ, मैं बहुत लंबी हूँ या बहुत छोटी हूँ, राइट? Do I look smart enough to go on stage and talk about stuff? Would they feel that I'm intelligent enough? These are the questions. Forget about public speaking and all of that. A small thing where you are sitting in a group and you really want to ask a question. You did not understand that one thing. You want to ask a question and you do not ask the question. Why? Because you feel that, oh my God, people are going to, judge me. What would they think? उन लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि कैसे स्टूपिड सा क्वेश्चन किया. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ये बात कि they ask the question, which is a beautiful thing, that they come out of their fear and they ask the question, but at the same time they ask me, Richa, you would say this is such a stupid question I'm asking, but I'm still asking that question. That much fear they have. Just imagine that much fear they have. Right? So whenever we are talking about fear, more than fear, it's the judgment. Because all the time either we are judging people, and because we are judging people so much, that's the reason we feel people would also be judging us. Right? तो हम हमेशा दो टाइप की फीलिंग्स में रह रहे होते हैं. एक फीलिंग ये होती है, सॉरी, दो टाइप के जजमेंट्स के ट्रैप में हम हमेशा फंसे हुए होते हैं. पहला है, सॉरी, माय समटाइम माय फोन का सीरी एकदम से पॉपअप हो जाता है. सो बहुत सारी बार हम हम ट्रैप्ड होते हैं दो तरह की चीज़ों में. इफ आई टॉक अबाउट जजमेंट, पहला चीज़ है fear of judgment from others. They will reject me, they will judge me, they won't talk to me, they will make fun of me, right? All the time that is there in our head, all the time. So much so कि हम लोग रात रात को सो नहीं पाते. We start overthinking about it. Okay? And on other side, you will see the people in your group only. अपने ग्रुप में आप आसपास देख लोगे, कोई ना कोई ऐसे मिल जाएंगे दो तीन लोग जिनका वो ग्रुप टाइप का बना होता है. दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीपल. वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ये हैं, वो हैं. वो मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप समझ पाओ कि या तो हम इसमें फंसे होते हैं कि हाँ यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ऐसा कैसे वो मेरे को ऐसे जज कर रहा है, वो मेरे को वैसे जज कर रहा है, या फिर हम फंसे होते हैं दूसरे को जज करने में ऑल द टाइम. ठीक. सो जब मैं बात कर रही हूँ कि और लोग होते हैं, इवन वी डू दैट. इवन वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि हाँ लोग ऐसा, वो ऐसा दिख रहा है, उसने ऐसे बात करी. Even when we are making fun, we feel that, oh, it's okay to make fun, we are just having fun. But nahi, us time bhi aap judge kar rahe ho, right? So let me start with the first point. Why or from where this fear of judgment starts in our life? ठीक. So understand one thing, that we are social beings, right? हम लोग अकेले नहीं रह सकते. सोशली हम लोग को साथ में होना बहुत ज़रूरी है. हम लोग को हमेशा, हाय वांजिचा, गुड टू सी यू, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. हे हाय नवजोत. ओके, yeah. You're absolutely right. I'm never gonna judge you. Okay, so what was that? Yeah. So from where it starts? So it starts from the thing that first concept we need to understand that we are social people and we always need people in our life. Okay, चाहे वो हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारी लाइफ में मतलब हम लोगों के जो एज बीइंग्स, एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग को बनाया ही इस तरह से है कि हम सोसाइटी में ही रहें. ठीक. सो अब जब हम बात करते हैं कि हमें सोशल बीइंग्स हैं, तो हमें हमेशा वो कनेक्शन चाहिए, वो बॉन्डिंग चाहिए, राइट? वो साथ चाहिए, वो कंपेनियनशिप चाहिए. ओके, चाहे वो एज अ सिबलिंग हो, चाहे वो एज एज पेरेंट किड रिलेशनशिप हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, चाहे वो एज अ स्पाउस हो, या
अपने खुद के बच्चे, राइट, किसी भी तरह की बॉन्डिंग, बट हमें वो चाहिए कनेक्शन हमेशा। तो जब हम बात कर रहे हैं कनेक्शन की, सो when we are born, even from the time, since the time we were born, we always wanted that connection, and that connection made us dependent on others. It's not like only we are dependent on others, they are also dependent on us. So we are, dependent on each other from our childhood. जब हमारा बर्थ हुआ था, अब उस टाइम डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में नहीं चाहिए था कि हाँ भाई हम लोग को जैसे कनेक्शन चाहिए या फिर अपनी बात शेयर करने के लिए चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। इन एवरी विच वे वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमारा कोई भी काम करना हो, वी वांटेड मिल्क, वी वांटेड देम टू give us bath, or any which way we wanted somebody to take care of us. At the same time we wanted to feel safe. When a kid is born, जब बच्चा आता है लाइफ में, तो उसका सबसे बड़ा जो वो होता है, सबसे बड़ा जो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, वो होती है फीलिंग सेफ। क्योंकि उससे पहले वो वूम में है, जैसे वो एग्जिस्टेंस में आया वो वूम में है, वो सेफ है, राइट। उसको बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, चुपचाप वूम में है, और जैसे ही वो पॉपअप हुआ बाहर, उसने ऑल ऑफ सडन इतनी सारी एनर्जीज, क्योंकि वहां वो सिर्फ अपनी मदर की एनर्जी से ही डील कर रहा है, राइट। जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आया, देयर सर्टेन एनर्जीज जो उसकी अपनी मदर की एनर्जीज हैं, सिर्फ उसी से उसको डील करना है, बाकी की कोई एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं उसको मैटर करेगी। जो उसकी मदर फील कर रही हैं, जो उसकी मदर इनटेक कर रही हैं, वो सारी चीज़ ही सिर्फ उसको मैटर करेंगी, राइट। उन्हीं से उसका इंटरैक्शन होगा। बट जैसे ही वो दुनिया में आया तो बहुत सारी एनर्जीज आई। कुछ एनर्जी सेफ एनर्जीज हैं, लव एनर्जी है, कुछ एनर्जीज अनसेफ एनर्जीज होती हैं। तो ऑल ऑफ सडन जब ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू सम न्यू सिटी, यू ऑल्सो फील स्कैर्ड, राइट, you also want to be safe. So kids, the way kids take stuff, babies take the things, they want to feel safe energetically also, ठीक। सो बोलते हैं कि बच्चों को जब भूख लगती है तब रोते हैं, बट ऐसा नहीं है। बच्चों को जब अनसेफ फील होता है वो तब भी रोते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा रो रहा है और मदर ने उठा लिया और गले से लगा लिया और बच्चा चुप हो गया? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अनसेफ फील कर रहे हैं, राइट। सो whenever we are born, we want to feel safe at that point of time, because that's a new thing, that's a strange thing for us. So sorry, just give me a second. Yeah. So we are feeling when we want to feel safe, we want that approval as well, right? तो जब हम आए, जब हमें सेफ फील करना था, जब हमें कनेक्टेड फील करना था, उस टाइम पे हम लोग के जो पेरेंट्स हैं या हमारे क्लोज वंस, जब भी हमें उनसे गुस्सा मिला या कोई भी तरह का रिजेक्शन मिला या कोई चीज़ जिसमें वो डिसएग्री हुए, तो हमें एनर्जी क्या मिली? एनर्जी हमको मिलती है कि either they are wronging us, or they are not in our favor, or they are rejecting us. And for that kid, that is unsafe, right? And they feel alone. And of course, nobody would want to feel alone, right? So जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अनसेफ फील हो रहा है उनको, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो फीलिंग्स पेरेंट्स की हैं या सिबलिंग की हैं या और किसी की हैं जो उनके आसपास हैं, उस एनवायरनमेंट में हैं, जब उनसे ये चीज़ें आती हैं, तब वो बच्चा और अनसेफ फील करना शुरू कर देता है। और ये जो फीलिंग है कि अनसेफ वो फील कर रहा है, और उसको फिर वो जो क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग चाहिए, राइट, वो और बढ़ जाता है। वो बॉन्डिंग जो नॉर्मल उसको चाहिए होती, वो कनेक्शन जो नॉर्मल उसको चाहिए था, वो अब और बढ़ गया। और जैसे 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 हम बढ़ते चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस, हमारे अंदर जो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से ये चीज़ और इंक्रीज हो जाती है। So we, more than other people judging us, we start judging ourselves. So whenever you are thinking that other person is judging me,
maybe I'm not looking nice. And when two people are talking to each other and they look at you, right, and you start feeling little awkward, they are talking about me, or they are bitching about me, or they are making fun of me. Whenever you feel so, just think one thing: are they judging you, or are you judging yourself? Right? So मैक्सिमम टाइम्स वो हमें कम जज कर रहे होते हैं और हम अपने आप को ज़्यादा जज कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाउट, राइट? Either we are judging ourselves, of course, or we are judging other people all the time. हम लोग कितनी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि हाँ यार मैंने ठीक किया कि नहीं किया, am I good at this or not, am I doing good in this job, am I doing good as a mother, as a father, as a husband, as a wife, as son, as daughter, right? So many doubts we are having inside us in day-to-day basis, and we are thinking about that only all the time. Just imagine if you are thinking day and night, you are thinking only these things: am I good enough? Then how will you get that strength inside you? If you're doubting yourself, of course the energy you're going to emit is of doubt, and that is how other people start doubting you as also, right? Few people say, so let me take an example. बहुत सारे लोग होते हैं जो I mean, चलो मैं किसी और का नहीं लेती, let me take my example, right? So हाँ, बहुत सारे लोग ना मुझे बोलते हैं कि बहुत पोलाइटली बोलते हो, बहुत स्वीटली बोलते हो, you know, we feel good when we talk to you because we feel connected. And at the same time, few people have said that, you know, you're too sweet, you know, sometimes it looks like fake. It's their perspective, it's their point of view. It doesn't matter to me, right? I am what I am, and I know whenever I'm talking to someone, the only intention I have is to help the person, and after beyond that, it doesn't matter to me what other person is thinking. If the person is able to connect with me, well and good, amazing. If the person is not able to connect with me, that is also good. What's the problem in that? I know मेरे से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई दुनिया में ऐसा जरूर होगा जिससे वो कनेक्ट कर पाएंगे, right? So why should I feel bad about it? It's their feeling, it's their point of view. So the two different people have different opinion about one person, the way a person is talking. It is so amazing to see two people. अब मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यूज पे जाऊँ उनके, तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू को मानूँ या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मानूँ? आई विल बी कंफ्यूज्ड. What should I do? Should I be like this, the way I am, or should I change myself? And if I will be you know, so indulged in other people's point of view, if I'll think so much about other people, what they are thinking about me, then तो मेरी तो लाइफ मैस अप हो गई. क्योंकि एक बंदे ने बोला आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा मैंने अच्छा करना शुरू करा, आई मीन वैसे ही बोलना कंटिन्यू रखा, और दूसरा बंदा है उसने कहा आप तो बिल्कुल नहीं ढंग से बोलती है, तो फेक लगता है, तो टू स्वीट है, राइट? और मैंने चेंज कर दिया अपना थिंग. अब जैसे ही मैंने चेंज करा, चौथा बंदा है उसने कहा यार आप तो पहले इतने प्यार से बोलते थे, अब क्या हुआ आपको? अब मैं सोचूंगी कि यार इसका मतलब पहले वाला ठीक था, फिर मैं चेंज करूंगी. What am I doing? I'll mess up my life. And that is what happens with all of us, because we see ourselves from other people's perspective, right? I'm not saying that, you know, whatever they say is always wrong or always right, but at the same time you need to understand that whatever they are saying, that is their point of view. You want to accept it, take it. You don't want to take it, don't take it. It is okay, but do not take the pressure of that. What we do, so somebody says something to me कि ठीक है आप अच्छे लगते हो ऐसे, but अगर आप कुछ और ये चीज करोगे, so somebody suggested me that if you use a little lighter color in your hair than your original color, you would look nice, you know, like the dark brownish and all that.
And that time I was like, okay, I'll try. And then once when I got chance, I did it and I liked it, right? But that doesn't mean that I will start thinking कि oh my god, अच्छा इसका मतलब मैं तो अच्छी नहीं लग रही. मैं जैसी हूँ जो भी हूँ, I am good and I am happy with myself. The only thing is कि yes, I am good, I am happy, and now there is a scope to growth as well. That's it. But if you will start thinking कि okay, somebody is telling me something to improve, that means I have something wrong inside me, or I am a wrong person, or whatever the way I dress is wrong, or whatever. That's not right. The way you are, the kind of person you are, you're absolutely fine, right? There can be a scope of growth, but it doesn't mean that you're wrong. And second perspective of the same thing is that, whenever we are thinking that these people are judging us, what we are doing, we are actually judging them as well, right? When we are thinking they're judging us, two people talking about me, they are judging me. Does it really matter? It doesn't matter. बट वी कीप थिंकिंग अबाउट दैट कि ओ माई गॉड वो मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में वो सोच रहे हैं, उन्होंने ये सोचा होगा, वो सोचा होगा. इतना सब में इंडल्ज होना, इज इट ओके? नो, इट इज नॉट. There's a gentleman, he's a psychologist, and I think psychiatrist and psychologist, Dr. Mel Gill, okay, and he said one day, I was just watching his videos, and in one video, he said something amazing that, you know what, there are, so what he said, yeah, exact words मुझे याद नहीं है, but he said कि, world's biggest, Earth's biggest mental institution is Earth itself. Why? Because in every 4 people, एक बंदा कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे troubled मिलेगा ही मिलेगा, right? Psychologically, somewhere the person will be troubled, either depression or some hypertension or some stress, some anxiety, something else, diabetic or any kind of thing. And that all happens because of the stress. And half of the stress comes from the judgment. So much. So just imagine, pura, this was so amazing to even think about, that whole earth is like a mental institution. And how much we are dependent on other people. Just imagine if you are standing in a mental institution, right? And some guy who has some problem and he starts, complaining, why are you standing here? Why are you doing this? You're not looking good. Go away from here. This and that and blah, 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 blah. Are you going to reply back? No, you're not. Why? Because you know that person is not, not in a proper mental state, right? You will just move away from there. You will keep a distance from that person. But here what we do, somebody says something, कूद पड़ेंगे उसके अंदर. किसी ने कुछ कह दिया, या तो हम अंदर 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 अपने आप को बैश करना शुरू कर देंगे, उसने ऐसे बोला, ऐसा हुआ होगा, मैंने ऐसे बिहेव किया, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, so many things. या हम उसे जज करना शुरू कर देंगे अंदर, इंटरनली. सो 2 तरह की चीजें होती है जब हम रिएक्शन करते हैं. 2 तरह के रिएक्शन होते हैं. एक रिएक्शन होता है जो इम्प्लोड होता है, दूसरा होता है एक्सप्लोड. इम्प्लोड हम अंदर करते हैं, एक्सप्लोड हम बाहर करते हैं. तो जब हम अंदर सोच रहे होते हैं ना कि वो बंदा ऐसा, वो बंदा वैसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, दैट मीन्स वी आर imploding inside we are reacting, right? Exploding is कि जब सामने वाले बंदे ने कुछ कहा और आपने रिप्लाई बैक कर दिया. Why do you have to reply? If you're talking to some mentally special person or somebody who is dealing with a lot of stress or anything, and you know about that, right? But mentally special person is a different, altogether different thing. But even if a person is dealing with a lot of stress or a lot of anxiety or a lot of any kind of that thing,
you would not reply back. You would think that, that person is dealing with so many things. I should keep my mouth shut. I'm supposed to help the person rather than creating a problem regarding that, right? But what we do in normal scenario, maybe that person is also dealing with some situation. Never ever forget कि कोई भी इंसान कोई भी चीज जब कर रहा होता है, बोल रहा होता है, फील कर रहा होता है या रिएक्ट कर रहा होता है, वो इंसान हमेशा किसी ना किसी एक्सपीरियंस से, खराब एक्सपीरियंस से आया है, ओके? बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम उसके एक्सपीरियंस को समझ नहीं पाते। हम लोगों को लगता है कि अरे भाई उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, बिकॉज वी डू नॉट नो देयर पास्ट, राइट? Because we do not know what they have gone through, what experiences they have had. So friends, whenever you feel that other person is judging you, my humble request to you is that please think that they have also gone through their own experience, and it's not about you, it's about them. It's about what they are feeling, you know, what thought process they are having right now because of their experiences. And at the same time, last but not the least, is whenever you some judgment comes in your head about other person, please please think कि अगर वही चीज आपके ऊपर होती तो आपको कैसा फील होता। और साथ में आपको ये नहीं पता उस टाइम आप जो सोच रहे हैं, उस टाइम जिस तरह से आपने रिएक्ट कर दिया, वो आगे कितने टाइम के लिए उस इंसान के दिल में चला जाएगा, उसको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर आपने वो अच्छे तरीके से बोल दिया, यू नेवर नो वो उसकी लाइफ कहाँ पॉजिटिवली ऑल्टर कर दे, और अगर आपने नेगेटिवली बोल दिया तो पता नहीं कहाँ कितना नेगेटिवली उसकी लाइफ ऑल्टर कर दे। सो गाइज, whenever some judgment comes in your head, please just take a minute, a second and think, अगर आपके साथ वही चीज हो रही हो तो क्या होगा, राइट? एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार उसने मेरे को बोला तो मैं बोलूंगा तो हूँ ही। इज इट गोना टेक यू समवेयर? कोई सोल्यूशन निकालेगा? नहीं। इट्स ओनली कमिंग बिकॉज यू फेल्ट बैड अबाउट इट, राइट? बिकॉज उसने आपको कुछ बोला या आपको जज किया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। सो whenever somebody is judging you, just think it's their point of view. You do not have to get into that. You keep your point of view with yourself and be happy about it. You know that you're the most beautiful person for yourself. You know that the way you are good. Yes, there's a scope of growth, of course, in everyone. That's why we are here in life. That's why we are experiencing life, to grow in our life, right? To learn new things. But that doesn't mean that you have any problem with it. So take judgments as scope of growth rather than taking it as a wrong way. Second thing is, whenever some judgment comes in your head, think how it is going to impact other person. Is it creating anything positive in their life, or is it taking them to one step ahead to negative side, right? So with this I would want to end it, and thank you so much for listening to me. And of course, your responses are coming so amazingly. In few weeks I'm also gonna start I'm gonna do my webinar as well. If you're liking my stuff, then you can join the webinar as well, okay? And I'll in any of the Facebook live I will also share the link to register on the webinar, okay? For today, this is it. Thank you so much. Take care. Bye bye. Have a nice time. Bye.